Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is on the topic carbohydrates. Second chapter, we will discuss it in detail about carbohydrates. These are the compounds of carbon, hydrogen and oxygen. And main source of these carbohydrates are the plants, green plants. Green plants prepare their food by the process of photosynthesis, and the initial compound that is formed through photosynthesis, that is glucose, C6H12O6. So producers, plants are the main source of carbohydrates. Carbohydrates are commonly also called as hydrated carbons. Hydrated carbons. In hydrated carbons, their empirical formula CXH2OY. The ratio of hydrogen and oxygen in these organic compounds, carbohydrates, is like the H2O water, and this Y is number and it may vary. So this is empirical formula of carbohydrates. Carbohydrates are chemically defined as polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or complex substances, polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or complex substances which on hydrolysis gives smaller subunits. So there are two purposes of carbohydrates. There are two applications in living organisms about the carbohydrates. Carbohydrates की दो इस्तेमालात बहुत important हैं. One is they are the source of energy. We know this in plants or in animals, in both cases, there is a process of respiration during which in this reaction energy is produced and it is converted into ATP, adenosine triphosphate, which is energy rich compound, energy currency. So from the carbohydrates, from the simple carbohydrates we get energy. This is one source. One application. Second application is they form structures. They are part of cells. They make cellulose of plant cell walls. Cotton is pure carbohydrate. So they also make the structures as well as they make availability of energy in the cells. The carbohydrates, they are of three types. One are monosaccharides, second one are the oligosaccharides, and third one are the polysaccharides. Monosaccharides, first let's discuss about the monosaccharides. हम सबसे पहले monosaccharides को discuss करते हैं. In these three forms carbohydrates exist in living organisms: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Monosaccharides are simple sugars. They are also called as simple sugars. They are sweet in taste. ये मीठी होती हैं. ये सादा तरीन carbohydrates हैं. Or they are soluble in water, but they cannot be hydrolyzed further.
इनको हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते, यानी कि ये बेसिक यूनिट्स हैं और वी नो दिस एग्जांपल्स, दे रेंज इन कार्बन 2 to carbon 7 monosaccharides. 3 carbon carbohydrates, they are called trioses. 4 carbon compounds carbohydrates, they are tetroses. 5 carbons, they are called pentoses. 6 carbon are hexoses and 7 carbon are heptoses. So in the carbohydrates, in this kind of monosaccharides, simple sugars, carbon chain ranges from simple 3 carbons, that are the trioses, 3 carbon से लेके up to heptoses 7 जो कार्बन तक ये रेंज करती है इसमें, और दे आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, दे आर सिंपल शुगर्स. ट्रायोजेज आर मोस्टली एबंडेंट, ये कसरत से पाई जाती हैं मोस्टली एज इंटरमीडिएट्स. दे आर नॉट द मेन कंपाउंड्स, मेन कार्बोहाइड्रेट्स. ड्यूरिंग रिएक्शंस लाइक क्रेब्स साइकिल, स्कैल्वन साइकिल, दे आर फाउंड एज इंटरमीडिएट्स. ये दरमियान में रिएक्शंस के आते हैं, कंपाउंड्स टेम्परेरी होते हैं और ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू अदर सेकंड कंपाउंड्स. सो टेट्रोसिस, दीज आर रेयर इन नेचर, यानी ये बहुत कम पाए जाते हैं नेचर में, बट दे आर मोस्टली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, स्पेशली इन बैक्टीरिया. एंड पेंटोसिस, these are the ribose sugars, includes ribose sugar, deoxyribose sugar. These are two kinds of well-known carbohydrates, ribose, deoxyribose. They are 5 carbon compounds, pentose sugars. आपको पता है कि we know about the nucleic acids, RNA and DNA. So in DNA and RNA, ribose sugar, deoxyribose sugar, these are the pentose sugar, ये पाई जाती हैं DNA में. RNA का अहम, the important component of carbohydrate, DNA and RNA. So also they are the source of energy. Hexoses includes glucose, fructose. These are the 6 carbon sugars. They are the main source of energy in respiration, during respiration process that occurs on mitochondria, and both in plants as well as in animals. So glucose is the main compound carbohydrate monosaccharide, the simple sugar which plants synthesize, जो कि पौधे तैयार करते हैं during photosynthesis process. Plants, they get carbon dioxide from atmosphere, they absorb water from the roots, through roots, and in the leaves the process photosynthesis carried out, यानी पत्तों में photosynthesis का अमल वाक़ होता है. और again one thing, the first compound carbohydrate, that is glucose, is synthesized there. So main source, main producers, plants, they produce the carbohydrates. Further, this glucose is modified. This may be converted into disaccharides. They may be further produce trisaccharides, 3 carbon disaccharide, 2 carbon compounds, tetra, and so on. So again, polysaccharides are also formed by the condensation of glucose. By the combination of glucose and fructose, they form the higher the polysaccharides compounds, which contain a long chain of thousands and thousands of monosaccharides to form a polymer, which we know they make the structures like starch, like cellulose, like glycogen.
सो प्लांट्स आर द मेन, पौधे जो हैं वो मेन सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की। इसकी थर्ड जो किस्म होती है, थर्ड टाइप जो कार्बोहाइड्रेट्स की, वो पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव सम एग्जांपल ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स, 2 or 3 एग्जांपल्स। ओलिगोसेकेराइड्स में मेन एग्जांपल इसकी हैं माल्टोज शुगर, ये दैट इज फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स। जो जौ का पौधा होता है, जौ का बीज, जौ का बीज जब उगता है तो उसमें ये माल्टोज शुगर पाई जाती है, ये सोर्स ऑफ माल्टोज है। सेकंड इज सुक्रोज शुगर, this is also called cane sugar, that is we extract it from the sugar cane. So this is the main sugar, table sugar we use at home in our eatables। जो भी हम खाना पकाते हैं मीठी चीज़ें, उसमें मोस्टली सुक्रोज शुगर होती है। थर्ड वन इज लैक्टोज शुगर विच इज़ फाउंड इन मिल्क। तीसरी जो इसकी एग्जांपल है लैक्टोज शुगर, ये मिल्क में पाई जाती है। मिल्क शुगर इट्स आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। लास्ट वन इज टॉपिक इज अबाउट द पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड, poly mean many, numerous, so numerous monosaccharides they combine together, they link together through glycosidic bond, glycosidic linkage, they form polysaccharides। its 3 examples are so obvious, इसकी बहुत मशहूर 3 एग्जाम्पल्स हैं। वन इज स्टार्च, निशास्ता भी जिसे कहते हैं आम ज़ुबान में हम। सेकेंड वन इज सेलुलोज, थर्ड वन इज ग्लाइकोजन। स्टार्च इज वी गेट इट फ्रॉम द cereals, rice, wheat, potato। Potato is the main source of starch। Starch has 2 types, one is amylose, other is amylopectin। इस सेकेंड वन, इसकी एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड्स की, दैट इज ग्लाइकोजन, दैट इज फाउंड इन आवर ब्लड इन एनिमल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। व्हेन वी ईट लॉट ऑफ शुगर, जब हम चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेस जो शुगर है, एक्सेस जो C6H12O6 होती है, वो कन्वर्ट होती है इनटू ग्लाइकोजन इन सेफ फॉर्म, दैट इज़ नॉट सॉल्युबल फॉर्म इन मसल्स, वो मसल में स्टोर होती है और लीवर में। थर्ड वन जो एग्जांपल है इसकी, लास्ट वन पॉलीसेकेराइड्स की, दैट इज सेलुलोज, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्लांट सेल वॉल। आल्सो कॉटन इज प्योर cellulose। Cellulose is we are unable, our system in animals, they are unable to digest cellulose, because in our digestive system, in our intestine, in our stomach, हमारे मैदे में, हमारी आंतों में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम नहीं। we are deficient with the enzyme that is required to digest cellulose। So in some animals like termites, दीमक जिसको कहते हैं, जो लकड़ी खाती है, दीमक, और कुछ जो हर्बीवोर्स होते हैं लाइक कोज, गोट एंड अदर एनिमल्स दैट आर हर्बीवोर्स, horses, they have in their intestines some protozoans and bacteria which digest the cellulose they eat। So this is today's topic about the carbohydrates। That's end। हो गया जी? कितने मिनट की होगी? आज तो ज़्यादा हुई होगी।